Hi everyone, welcome to the Expertsedge. So we are doing the ShortCATs 1 minute methods. The topic is the geometry, again the triangles, the 7th session of the triangles, and in this particular session we will be doing this very much thing, that is Pythagorean triplets. What are the Pythagorean triplets? Basically which follows the Pythagoras theorem, right? You must have heard Pythagoras theorem. What is the Pythagoras theorem? It applies in a right angle triangle. अगर ये A है, ये B है और ये hypotenuse है, तो hypotenuse square should be equal to A square plus B square, right? So this is a very basic, you must be knowing it. Now there is one way कि आप तो obviously वो calculate कर करके निकालो कि let's say if I give this B as 8 and let's say I give A as 15, है ना? तो आप H कैसे निकालोगे भाई? 8 square plus 15 square and do that calculation, but it will take time. ठीक है? So there is a good method how to find the triplets, that is which follows the Pythagoras theorem, right? So the very first case is if the smallest side is odd. Okay. So let's say the smallest side if I take is 3. If I take the smallest side as 3. So what is the first step? Square this smallest side. So what will be square of this 3? So 3 square, step 1, let me write it here. Step 1. It is squaring the smallest side. ठीक है? Squaring the smallest side. So क्या होगा इसका square? 3 का square is 9, right? Now the second step. So the square of 3 is 9, right? The 3 square is 9. Second step is just divide this 9 by 2. So what? Divide or half this 9. So what it will be? 9 by 2, it would be 4.5. So I want the integers which are the proper numbers. 4.5 is not an integer. So 4.5 से आगे वाला integer चाहिए मुझे, तो 4.5 से आगे कौन सा होगा? It would be nothing but 5. और 4.5 के पीछे कौन सा होगा? It would be nothing but 4. Okay. So my triplet which follows the Pythagoras theorem is 3, 4 and 5. Okay, so this is a triplet which follows a Pythagoras theorem. If you want to, you can cross check. 3 square plus 4 square should be equal to 5 square, right? It is 25. It is 9 plus 16. Okay, so you can generate this thing. So let's say if I say 5, if my smallest side is 5, so what I'll do? अगर मेरी smallest side 5 है, तो I'll now quickly go 5 का square, it will be 25, right? 25 का half, it will be what? 12.5. 12.5 के आगे पीछे का नंबर पकड़ लो, तो 12.5 के पहले आएगा 12 and 13. So there is another triplet. So tell me of 7. 7 का क्या होगा? 7 का square is 49. 49 का half, it is nothing but 24.5. So 7 का triplet होगा 24.5 के आगे पीछे के integers, that is 24 and 25. Okay. Just tell me, you only just pause the video and tell me 9 का क्या होगा, 11 का क्या होगा, right? So 9 का triplet will be what? 9 का square, it is what? 81. 81 का half. 81 का half is nothing but 40.5. So 40.5 के आगे पीछे के numbers. So I'll get it as 40 and 41. And last is 11. 11 square is 121. Half will be 60.5. So the triplet is okay. So I hope you get this method. So this particular method is to generate triplets given the smallest side is odd. Okay. So out of this, please remember this first 3. 3, 4, 5 is the triplet, 5, 12, 13 and 7, 24, 25. Okay. Now next is if the number is even. Because if it's a even means basically 2x का form होगा, right? और मैं इसको square कर दूंगा तो ये number basically 4x square हो जाएगा, right? So जब भी even हो, what you need to do is the process remains the same, but you don't need to divide it by 2, you need to divide it by 4. Let's say if I take this, it is 6 example. ठीक है? So what I'll do, smallest side is 6. So just square it. So 6 का square is 36. Now I'll divide 36 not by 2 but 36 by 4. Remember this. So मैं जब odd था, odd में क्या करता था? 2 से divide करता था, even में 4 से करूँगा. 36 by 4 is 9. So 9 को drop करो. 9 नहीं लेना है, 9 के आगे पीछे के नंबर, मतलब I'll take 10, I'll take 8. So the Pythagoras triplet of 6 is 6, 8 and 10. So please remember this there. Let's say if I take 8. So what it will be? 8 का square 64, divide 64 by 4, it is 16. 16 को drop करके आगे पीछे के नंबर कौन से होंगे? 15 और
17. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट, बहुत बार एग्जाम में आता है ये, प्लीज ध्यान रखना, राइट. लेट्स मी टेक लास्ट 10. सो 10 स्क्वायर इज 100, 100 by 4 is 25, 25 को ड्रॉप करो, 24 के आगे पीछे के नंबर विल बी 25 के आगे पीछे के नंबर विल बी 24 and 26. So this is 24 and this is 26. Okay. So I hope you're getting this. So please remember. अच्छा, इसमें दो चीज याद रखना. फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे हमको सारे ट्रिपलेट नहीं मिलते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको एग्जाम में जरूरत है सारे मिल जाएंगे. देयर आर सम एक्सेप्शन विच डोंट फॉलो दिस व्हाट वी कॉल दिस फंडा, राइट. जैसे एग्जांपल एक्सेप्शन, ठीक है, जैसे one of the example is 20, 21 and 29. ठीक है, this doesn't follow that thing. Okay. So ऐसे कुछ एक दो और भी हो सकते हैं, मतलब जस्ट रिमेंबर कि सारे ऐसे नहीं आएंगे, बट जितने भी आपको एग्जाम में काम है, बट दिस मेथड कैन बी वेरी मच यूटिलाइज देयर. सो मस्ट रिमेंबर ट्रिपलेट्स. सो लेट अस जस्ट रिवाइज. मस्ट रिमेंबर ट्रिपलेट कौन से होंगे? यू शुड रट्टाफाई दोस, राइट. सो वेरी बेसिक ट्रिपलेट इज 3 4 5, राइट. मैं इसी को ही कितने टाइम्स भी कर सकता हूँ, राइट. जैसे मैं इसको अगर डबल कर दूं, तो इफ आई डबल दिस आई विल गेट अ न्यू ट्रिपलेट, व्हाट, 6 8 and 10, राइट. आई कैन आल्सो डू ट्रिपल एंड सो ऑन सो फोर्थ. Similarly, second is 5 12 13, right. Another is 7 24 25. Must remember this. 8 15 17, राइट. ये बिल्कुल रट्टा ही मान लेना. ये 5-6 ट्रिपलेट्स बहुत काम के, राइट. इनफैक्ट 11 का भी याद रख लो. 11 60 61, राइट. बचे हुए एक तो ये ट्रिपलेट आएंगे, या फिर इसको कुछ n टाइम्स कर देगा, राइट. डबल ट्रिपल वॉट, ठीक है. बट एज यू सी द फिगर्स, दिस ट्रिपलेट शुड स्ट्राइक, बिकॉज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस ट्रिपलेट. जैसे ही मुझे पता चला कि ये ट्रिपलेट है, राइट, अगर मैं बोलूं कि लेट्स से फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग अ क्वेश्चन हियर, ऑफ ट्रायंगल हैविंग साइड्स let's say 20 48 and 52, ठीक है. अगर एक ट्रायंगल है जिसके 3 साइड्स है 20 48 और 52, वैसे आप फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या जाएगा इसमें क्या करने के लिए? यू विल गो बाय द जनरल हेरोन्स मेथड वाला फॉर्मूला, राइट, जिसमें तीनों साइड दिए होते रूट ऑफ x s into s minus a वगैरह. बट इफ यू जस्ट पे अटेंशन हियर, इफ आई डिवाइड दिस बाय 4, कुछ कॉमन है इसमें 4 है. अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं, टेल मी क्या आएगा? 20 by 4 is 5, 48 by 4 is 12 and this is 13. So can you see this 5 12 13 is a triplet, right? So basically ये मैंने 5 12 13 को 4 बार किया उन लोगों ने, राइट. सो बेसिकली ट्रिपलेट है, मतलब इट फॉलोज अ पाइथागोरस थ्योरम. और राइट एंगल ट्रायंगल का एवरीवन नोज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टू गेट द राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया. एरिया इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. इफ दिस इज माय बेस एंड दिस इज हाइट, सो एरिया इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. सो आई कैन गेट आंसर क्विकली. सो इसमें बेस क्या होगा मुझे ये पता है, ये 90 डिग्री होगा. 52 विल बी माय हाइपोटेनस. सो मेरा एरिया जो हो जाएगा दैट विल बी नथिंग बट हाफ into 20 into 48. Okay, so 480 should be the answer. So I hope you are getting this. हम जो आगे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी के बेसिस पे करेंगे, बट प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स गो टू इट. सो दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है. देखते सी आ जाएगा क्या दिया हुआ है. मेरा ओ सेंटर है और फाइंड द लेंथ ऑफ एच. ये सबको पता होगा. इन सर्कल अगर मैं सेंटर से कॉर्ड पे ले जाऊं, इट बाइसेक्ट्स, इट बिकम्स अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. दैट मींस ये और ये हाफ होगा. सो अगर टोटल कॉर्ड 24 का, तो ये कितना होगा? 12. ये 5 है, ये 12 है. कैन यू टेल मी द ट्रिपलेट कौन सा स्ट्राइक हो रहा है? 5 वाला ट्रिपलेट होगा. 5 12 13, राइट. सो इफ दिस इज 5, दिस इज 12, दिस हैज टू बी 13. दिस इज नथिंग बट द रेडियस, राइट. ये जो 13 है ये रेडियस है, और रेडियस पूरे सर्कल का सेम होता है. सो अगर मेरा OC 13 है, so I can say मेरा OF भी 13 होगा, right? So this will be 13 only. So अगर ये 13 है and I know this is again this will again bisect this chord 10, तो ये हो जाएगा मेरा 5. तो again same triplet repeat हो रहा है. 5 13, तो how much should be the H? H should be 12. So answer of this question should be 12. Okay? Don't go by general method Pythagoras, वो square करके minus, जब सीधा ही दिख रहा है तो के time waste करे, right? Now let's go to the second question. इन रेडियस, व्हाट इज द इन रेडियस? अगर मैं ट्रायंगल के अंदर सर्कल डालू, राइट, इन सर्कल, तो इसका जो रेडियस होगा दैट आई कॉल इट एज अ इन रेडियस, राइट.
इसका फॉर्मूला एरिया का वी हैव डन इन फिफ्थ नंबर का वीडियो. इफ नॉट डन प्लीज रिवाइज दैट वीडियो. व्हाट इज दैट? एरिया इज इक्वल टू r into s. व्हाट इज r? where r is a in radius where s is a semi perimeter. तो इसका सेमी पेरीमीटर कितना आएगा? इसका मुझे सेमी पेरीमीटर आएगा 17 plus 17 plus 16 by 2, right? 34 plus 16, 50 by 2, 25 is my semi perimeter, right? So I need to find in radius. just मुझे एरिया निकालना है, right? अब तीन साइड देख के जल्दी से वो हेरॉन्स पे मत चले जाना, ठीक है? just let us see what it says. This is given as 17. This is also 17. This is what? A, B, C, right? And this is 16. Now a very important point here, okay? I'm just making a note of it. Please remember this point. Very important note that in isosceles triangle or isosceles or equilateral triangle, ठीक है? दोनों ही क्वेश्चन में, दोनों ट्रायंगल्स में ही चलेगा. जो भी अगर हम एक लाइन ड्रॉप करते हैं सेंटर में से, ठीक है, वर्टेक्स में से, if this is a line, this will be everything. Everything means this I can consider it as a perpendicular bisector, right? I can consider this as a median. I can consider this as an angle bisector, right? I can, जितने भी ये प्रॉपर लाइंस होते हैं आपके, अल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड अ मीडियन, ये लाइन सब हो जाएगी. ये कौन से दो ट्रायंगल्स में होंगे? सिर्फ आइसोसेलेस और इक्विलैटरल, बेसिकली जिसके ये दो लेग सेम है, राइट? सो इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम दिस, ठीक है, सो यूजिंग दिस फंडा, अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप करूं तो कैन यू टेल मी ये बीसी को कैसे डिवाइड करेगा? Because it's a perpendicular bisector, it will divide into equal half. So basically ये A हो जाएगा 8 और ये भी हो जाएगा 8. So can you see, अगर ये साइड 8 हुई, ये 17 हुई, which triplet? So basically 8 का ट्रिपलेट क्या था? 8 का स्क्वायर 64 by 4 है ना, 16 plus 1 minus 1, 8, 15, 17. तो अगर ये 8 है, ये 17 है, तो this has to be 15. So that's it. So I can get area now. What is the area of this triangle? Area will be half into base into height. So half, base is what? 16, height is 15, right? So my area would be 2, this is 8, 15 is 120. But I don't want area, what I want in radius. So just put it in this formula. Area is 120. I want in radius. Semi perimeter is how much? 25, right? So now 25, this will be how much? 25. 8 should be my, sorry, not 8 this would be what? 120 by 25, right? So how much it will come out to be? कुछ फ्रैक्शन में आएगा, right? अगर मैं डिवाइड करता हूँ 5 2 10 and 5 4 this is 24 by 5. So 24 by 5 is 4.8. So 4.8 is the in radius of this particular question or my answer. ठीक है? So जहां पे भी आपका टाइम बच सकता है, you can save this. अभी तो हमने सिर्फ बेसिक क्वेश्चन शुरू किए, but it has wide application. So please remember this funda. Okay. The next question. Okay. Now let's say question number 3. What it says that in triangle ABC, that here is a triangle. Just let me draw it. This is my A, this is my B, this is C. Okay. Now this length of AB is 65, this is 70 and AC is 75. There is a AD. AD is a perpendicular. It's not a perpendicular bisector. It's not an isosceles triangle or equilateral. So this is it. So what is us? Find AD. We need to find AD. Okay. So the general here is what we'll do. तो फर्स्ट तो दिमाग में ये आएगा रिएक्शन की लेट्स से दिस DC एज ए x. सो ये कितना होगा? ये मेरा 70 minus x हो जाएगा, राइट? एंड लेट्स से दिस समथिंग एज k. As it is 90 degree. So basically I have three things. What? एक मेरा x है, ये मेरा k है और ये 75 है, और दूसरा क्या है? 70 minus x. This is another k and this is 65. Why I am writing this? Basically this both are hypotenuse. So
if you factorize this, just try to factor 65 क्या होता है 5 into 13, right? And 75 is 5 into 15. So just थोड़ा अगर मैं hit and trial करूं, just a second. So basically 65 is what? This is 5 into 13, okay? And similarly this is 5 into 15. So can you just think of a triplet where my hypotenuse, because these sides are opposite of 90 degree, hypotenuse you get a multiple of 30, you get a 13 or you get 5. 13 तो फट से स्ट्राइक हो जाएगा. 13 कौन सा होगा? 5, 12 and 13. So basically इसने क्या किया है? 5, 12, 13 का ट्रिपलेट को into 5 किया है. So क्या साइड्स आएगा? 5, ये 25 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा. Now there is one number in common between both of them, right? This will be what 25, this will be what 60 and this is 65. So अब यहाँ पे अगर मैं ट्रिपलेट लेता हूँ जिसमें एंडिंग एक तो 15 या 5, तो व्हाट इज द 5 वाला ट्रिपलेट जहाँ पे हाइपोटेनस 5 हो? कैन आई टेक 3, 4, 5? यस. अगर मैं 3, 4, 5 लेता हूँ and I multiply this with 15, right? So ये हो जाएगी साइड 75, 15 4s are 60 and this is 15 3s are 45. So can you see I got a one number in common and which is not 60. That would be nothing but my k. And can you again also see कि जो मेरे दो बचे उनका टोटल बराबर 70 आ रहा है, right? So this is the triangle he has given us. So my answer for this question is k should be equal to 60. Okay. The only purpose of this method is to not to go by the generic way, by the because दो वेरिएबल पाइथागोरस थ्योरम 2-3 बार लगाना, इट विल गो टफ. ठीक है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी हो जाना चाहिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट. सो क्वेश्चन नंबर 4. नाउ दिस अ CAT 2001 question. ठीक है. Though I have given a diagram, in exam there was no diagram. Okay. So what it say? The ladder leans against the wall. The top of the ladder is 8 meter above the ground. ठीक है. This is it. AB and bottom is moved 2 meter farther away from the wall. Okay. The top of the ladder rests. What is the length of the ladder? तो ये कुछ ऐसी डायग्राम आएगी, राइट? सो आपको ऐसा ट्रिपलेट चाहिए एज इट इज 90 डिग्री वॉल एंड अ लैडर, इट वुड बी 90 डिग्री, राइट? सो बेसिकली मेरा जो ट्रिपलेट बनेगा वो बनेगा 8x और x plus 2. कैन यू थिंक ऑफ अ ट्रिपलेट जिसमें 2 का डिफरेंस है? 8 का तो ट्रिपलेट हमको पता है, क्या ट्रिपलेट है 8 का? 8, 15, 32. लकीली दिख रहा है ये जो डिफरेंस है इट्स नथिंग बट 2 ओनली. सो माय आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर? लैडर का लेंथ होना चाहिए 17. So 17 is the answer of this question. Okay, 17 was in the option and there was no cannot be determined. Okay. Okay, let's take this question number 5, that is in CAT 1995. Again, diagram was not given. I'll suggest to pause the video. Okay, try to make the diagram and solve it and then see the video. I'll draw the diagram as well. Okay, साथ में एक बार करते भी है. क्या दिया है? Length of the ladder is precisely equal to the length of the wall. Let's say ये वॉल है मेरा x का, तो जो मेरा लैडर है वो भी x का होगा, राइट? देन इट सेज दैट इफ द लोअर एंड ऑफ लैडर इज केप्ट ऑन द स्टूल ऑफ द लेंथ 3, तो ये जो है मेरा स्टूल है, सो ये 3 का कुछ स्टूल होगा, राइट? एंड स्टूल इज केप्ट 9 मीटर फ्रॉम द टिप ऑफ द वॉल, समथिंग लाइक दिस. बिकॉज ये स्टूल है तो इट वुड बी समथिंग ऐसे होगा. ये तो मेरे डायग्राम लाइक दिस, ये 9 है. बिकॉज लेंथ ऑफ द वॉल इट हैज टू बी, length of the ladder has to be equal to the height of the wall, so it would be nothing but x plus 3. Okay, so ये भी x plus 3 होगा, तो ये भी x plus 3 होगा, ये 9 होगा, right? Now what I need is just I need to find the triplets. Okay, so basically ये 9 है, ये x है और ये x plus 3. What I need to find? Height of the wall. What will be the height of wall? Will it be x? No, it will be x plus 3 because ये मेरा stool भी wall पे ही है ना, so this would be x plus 3. So triplets, this can be 9, this is x and this is x plus 3, right? X plus 3 as it is opposite to 90, it has to be hypotenuse. So 9 से मुझे क्या ट्रिपलेट स्ट्राइक होता है? जो सबसे पहला ट्रिपलेट स्ट्राइक होगा, लेट्स से 9 का स्क्वायर ऑड है, इट विल बी 81, राइट? एंड 81 का हाफ 40.5, so 9 का ट्रिपलेट इज 9, 40 and 41. Will this go? No. Why? Because ये दोनों साइड का डिफरेंस मुझे 3 चाहिए था.
बट 40 और 41 का डिफरेंस इज ऑफ 1 ओनली, तो दिस ट्रिपलेट विल नॉट गो। और कहाँ पे मेरा 9 आ सकता है ट्रिपलेट में? एक वेरी बेसिक ट्रिपलेट हमने देखा था विच इज दैट 3 4 5। तो अगर मैं 3 4 5 के 3 को ट्रिपल कर दूं सो आई विल गेट 9, राइट? सो इफ आई ट्रिपल 3 4 5 वाला ट्रिपलेट, 3 4 5 को अगर मैं ट्रिपलेट को ट्रिपल कर दूं तो व्हाट आई विल गेट इज 9, 3 4s are 12 and 15. Can you see what is the difference between 12 and 15? It's nothing but 3, and that is what I require. So basically my x is 12 and x plus 3 is 15. So my correct answer for this question is 15. Okay, so just bit of a hit and trial, but believe me, you'll get this question very easily. Okay, now let's start with something conceptual and mock level questions. These were pretty much basics. अच्छा, एक और है कैट का क्वेश्चन. What it says, Euclid has a triangle in mind. It has the longest side has a length of 20, okay, and another side is 10. So let me draw a triangle. So this is the longest side. अगर ये 20 का है, एक साइड 10 है, एक साइड मुझे पता नहीं है, और मुझे क्या पता है? एरिया पता है. What is the area? Area is 80. Okay. So ठीक है, सो इसका जनरल मेथड वही होगा ये लेके, बट अगेन आई विल टेक सम हिट एंड ट्रायल. ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर? ओके, लेट्स से इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर हियर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ठीक है, सो अपोजिट साइड विल बी नथिंग बट 10, राइट? कौन सा ऐसा ट्रिपलेट है जहां पे मेरा हाइपोटेनस 10 आ सकता है? वी जस्ट सॉ 10 आने के लिए 3 4 5 का ट्रिपलेट, राइट? सो कैन आई से आई एम जस्ट डूइंग हिट एंड ट्रायल, इवन मुझे भी नहीं पता, आई एम जस्ट सॉल्विंग विथ यू गाइस. सो 3 4 5 को अगर मैं डबल कर दूं, ओके, सो व्हाट आई विल गेट इज द 6 8 एंड 10. ओके, सो आई कैन से कि लेट्स से मैं इसको 8 ले लेता हूं एंड लेट्स से मैं इसको 10 ले लेता हूं. ठीक है, तो अगर ये 10 हुआ तो ये भी 10 होगा, राइट? Because the total is 20. And what will be the area of this? So area will be nothing but half into base into height. What is base here? Base is 20 and height is 8 as we just got, and area is nothing but 80, right? Perfect. We were looking for this. आ गया ना हमारा 80. Just bit of a hit and trial. अदरवाइज दो वेरिएबल के साथ ऐसे करने में इट विल टेक सम टाइम. सो दैट्स इट, आई गॉट इट. सो बेसिकली 90 डिग्री, ये 8 है, ये 10 है, ये x है. अब ये हो सकता है ट्रिपलेट हो या ना हो, बट वट एवर यू विल गेट द आंसर. तो क्या होगा? मैं x इज माई हाइपोटेनस, सो दिस इज व्हाट 6 10, तो मैं x शुड बी इक्वल टू नथिंग बट रूट ऑफ 8 स्क्वायर. 10 is not hypotenuse. Don't take 6 at 10 का triangle. Okay, 10 तभी होगा जब hypotenuse हो, but here hypotenuse is x. So मेरा x होगा this. So it will be nothing but x is root of 164. Okay, so root of 164 is the final answer of this. Okay, so I just hope that you are getting the hang of it. Please remember, it's a very important thing. Okay, that's why I made a dedicated video for the Pythagorean triplet. Chalo, next. Now the question number 7, a very beautiful question. A triangle, which of the following true triangle has a maximum area? So if I draw both the triangles, okay, so this is 5, this is 5, this is 6. Another triangle, this is 5, this is 5, this is 8. डू यू रिमेंबर फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एक फंडा सीखा था दैट इन आइसोसेलेस और इन इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर मैं एक लाइन ड्रॉप करता हूं मैं इसको कुछ भी कंसिडर कर सकता हूं, राइट? मीडियन, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, अल्टीट्यूड. सो आई विल कंसिडर दिस एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट? सो अगर मैं जैसे इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंसिडर कर रहा हूं दैट मींस इट विल डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ. सो ये हो जाएगा मेरा हाफ मतलब 3 3. So can I get a triplet? Yes, ये 3 है, ये 5 है, तो this should be 4, right? Now this is also perpendicular bisector. So जैसे ही मैंने इसको देखा कि perpendicular bisector है, ये क्या होगा? This would be 4 and this would be also 4 and this will be nothing but 3, right? So can you see? Basically मैंने सिर्फ ये किया है,
इसका हाइट इधर आ गया, इसका हाइट उधर चला गया. इनका अगर मैं एरिया देखूं, ठीक है, जस्ट ट्राई एंड गेट द एरिया. What will be area of this? Area of this triangle. Area of this triangle will be half base. What will be the base? Base is nothing but 6. And what is the height? 4, right? So its area will be what? 12. Now see area of this triangle. Half 8 into 3. Again you will get 12. So what is the basic reason? Basically अगर मैं area of triangle क्या होता है? Half base into height. I'm just writing here. Half base into height. अगर मैं half base into height को मैं half height into base लिखूं, will my answer change? No. सिर्फ multiplication का order change कर रहा हूँ. So to keep the area constant, what I'll do? ये 4 था height और base था 3. I'll just swap them. So 4 को मैं इधर लेके आऊंगा, 3 को मैं इधर लेके आऊंगा, right? So that is what happening here. So this in this particular question, in both of this will have area same. Don't fall into trap कि फटाफट जल्दी से दोनों का हेरोन से इसका एरिया निकालोगे, हेरोन से इसका एरिया निकालोगे. It will take time. Okay, so I'll take one CAT question based on this. A very good question. ठीक है, a triangle has sides 41, 41, 18. Let me draw a diagram. ठीक है, again isosceles triangle. Another triangle has sides same, it is also 41, it is also 41, and this is x. Don't tell x as 18. उसने clearly बोला x is not equal to 18. Okay, and what clue he has given? That the two triangles have the same area. ठीक है, मुझे पता नहीं वो एरिया क्या, बट जो भी एरिया होगा दोनों का सेम है, राइट? अभी हमने किया था क्या, हाफ बेस इंटू हाइट लिखो या हाफ हाइट इंटू बेस लिखो, एरिया तो सेम रहेगा. सो बिकॉज इट्स आइसोसेलेस ट्राइंगल, I can apply that trick. Which is that trick? That I'll drop a perpendicular bisector from here, right? ये ऐसा और इसमें भी. So अगर मेरा यहाँ पे let's say height आया h और ये है x, this part, right? So to keep the area constant, what I need to do? ये x को मैं यहाँ पे रख दूंगा और height को same रख दूंगा, right? So इनका area same रहेगा. Don't confuse this x with this x. ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख दिया था वो x. ठीक है, if you want you can go by general way as well. So tell me, because it's a perpendicular bisector, what will happen? This is 18, 18 का ये half हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9. As soon as I get ये 9 है, ये 41 है. Can you tell me the triplet? 9 का triplet क्या था? 9, 40, 41, right? अब तक याद हो जाना चाहिए. तो ये 9 है, 41 है, this will be 40. Now tell me, to keep area constant, what should I do? ये जो 40 height है, मैं इसको base बना देता हूँ और इसको 9 बना देता हूँ. बिकॉज इट्स अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये 40 है तो ये वाला पार्ट भी 40 होगा. तो टोटल x विल बी नथिंग बट माई 80. ओके, सो आई जस्ट होप यू आर गेटिंग हैंग ऑफ इट. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 80. ओके, सो प्लीज प्रैक्टिस. जितना आप ट्रिपलेट याद रखोगे, बिलीव मी, इट विल हेल्प अ लॉट इन द ट्राइंगल्स क्वेश्चन, स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, कुछ भी डाउट हो, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन रीच मी देयर. ऑल्सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू एवरीवन.